Hello viewers, good evening. Apni kan sai ase Nagamese Prime Time News. Moi Mr. Lamchen. Khobor kan itia detail se chanai dibo. Nagaland Police Service Association 52nd General Conference se media logode Wednesday de khoda kurikina Director General of Police Rupin Sharma pra ke hoi camp laga mamla oporde khushi ki halat ke control de ani bole parikina ase. DGP khushi ki mamla chuli ase idu to tai khan laga majode ase. Judi mamla society bahar naula aro iku diktari nanile tak itu hobo kushe. Sharma kushe ki Nagaland Police Assam Rifles aro security forces pra law aro order ke maintain rakhiwole coordinate kuri ase. Reporter Niboli Yeptolagar report kise. I was in Dimapur that day, so I thought that let me go and have a look at where the camp is physically located so that uh, if appropriate instructions are to be required for law and order and security reasons, those can be conveyed down the line. So I just visited that area, generally visited that area to see how is it located. So things are okay. Whatever is going on in the KOI camp or that faction, it is their internal matter. So long as it doesn't spill onto the street and create law and order problems for the rest of the society, it's fine. Uh, in the process, I'm thankful to the civil society organizations who have come up with a statement that law and order should not be disturbed. On our part, we, Nagaland Police and Dimapur shehar to severe water logging issues samna kuri ase drainage systems pal nathakya pra. Ground report kura homoite Nltv pra janibole parishi ki Durga Mandir laga osor area to flat huigina ase. Aro drainage to bishi biya pra damage huigina ase. Local shopkeepers khan pra khwa hisab te pani to jua moina pra rasta de flow huigina ahi ase. Aro nala aro chapra khan ikki miligina jaga nimite ahaja kura manukan bishi diktari pai ase. Ido opor de reporter Moilong laga ground report sawo. আচ্ছা তো পাইয়া ইদু রাস্তাতে পানি তো কিমান দেৰি হৈছে জমা হৈ কিনা এইটো তো 3 মান্থস নিচিনা হৈ আছে কোনবা টাইমতে ঠিক হৈ যায় মানুহখন অলপ অলপ কৰাই দিয়ে নহলে আৰু বিয়া হৈ যায় তো আপনি খান ইদু সাফা কৰিলা নকৰি পানি দ আমি খান তো অলপ চলপ কিবা ডান্ডা পৰা ক্লিন কৰি দিয়ে হলে বি এইটো এনেকাই আছে তো টিএমসি আন বা আই কিনা কো ইনিশিয়েটিভ দিছন ল নাই ডিএমসি খান বি কৰিছে লাষ্ট টাইম হলে বি আৰু লেটাৰ হৈ যায় গাৰ্বেজ ফলা কাৰণে বেছি হয় নেকি ইয়াতে কৰ্নাৰতে নালা ব্লক হৈ যায় গাৰ্বেজ কাৰণে তো আপনি বি তখন ট্ৰেইন লাগা লোৱা খান সব চুৰি কৰি কিনে লৈ যাইছে এইটো কাৰণে আৰু ব্লক হৈ যাইছে তো আপনি বি তখন অসরতে খুলি কিনা আছে তো কি ডিফিকাল্টিজ ফেস কৰি স্মেল আহে আহা যোৱাৰ কাৰণে দিগদাৰ আছে মাইকী খান তো বেছি দিগদাৰ পায় আৰু লেটাৰ হৈ যায় ড্ৰেইন লাগা পানী আছে মানি খান টেম্পল যা টাইমতে ঘৰ পৰা ওলা টাইমতে দিগদাৰটো পায় Nagaland TV kan hotai amne an ke public awareness la oporte news coverage kan ti deke idu ishina ajibi Nagaland TV kan Marwari Pati near idu Chen College Durga Mandir la osor da aikina ase aro yati taka Dimapur taka public han ba do tiki dekho pari apni an ida videos tv tikule para ishina tik idu Durga Mandir aro Chen College char rasta pali do yati hotai pani unseason tv yati pani jama hoi kina thaka do ami khan tiki pai aro আপনি সবে জানা আছিনা ইটো রাস্তা বাটো স্টুডেন্টস খান হুবি নালবি পাবলিক খান হুবি আহা যাও কৰি আৰু ইটো দুৰ্গা মন্দিৰ লা ওচৰ দিবি এসটিজেন কলেজ বি আছে আৰু স্কুলস খান বি বেছি আছে তো স্টুডেন্টস খান আহা যাও কৰতে আমদি খান টিকি থাকে তো ইটো লাগা ওপৰতে ইটো পানী জমা হোৱা লা ওপৰতে ওচৰতে জাগা দোকান মালিক লতে হুতা হুতি কৰা দমতে তাইবৰা আমি আনকি জানাই দিছে কি ইটো পানী জমা হোৱাটো সিন্স লাষ্ট ইয়াৰ নৱেম্বৰ মহিনাৱা এনা জমা হোৱা লা সিবিনা আমি আনকি জানাই দিছে আৰু ইটো ক্লা নই কিনা Takan bra time to time sapa kuri dibi it lasts only for 3 to 4 days itu bishi dia aru ri pani jama hoi guna bi ami anki janai dise aru moi cameraman ki bi ekbar request kori ase amni kan এটা ভিডিওস টিভি tikule para ashina ঠিক itu nala la osore chapra kan bi inaga pikai kina ase aru pani bi olai ase to kitel chapra aru pani ikiloti ina thaigo itu pani wa itu chapra do pura lui gina itu nala de jai aru itu nala pai pani to power flow no hoi gina blockage hui jai gina nala la pani to pura rasta de ai gina ami kan public kan ikla suffer kra to ami kan tiki paise aru ami ke public kan ba janai dishe ke itu amnian ita digole para ashina tik itu iron rod pe ase aru itu iron rod tu kun ba ase holibi pro te light tv itu iron rod tu chor gri gina bi ami ki janai dishe aru tamra ami an ki janai che ke ite ekta dita iron rod tikabe just in 2 to 3 days chor hobo pari gina takan itu phui dibi ase gina ami an ki janai dishe
aru amni kan visual stick bi dikole para china aru academic one nishina students kan bi aha ja guri aru gari kan bi chutu hobi tangor hobi two wheelers kan hobi aha ja godo ami kan diki pai ase aru students kan aha ja gura dam de gari kan ba kita to speed pa jai gina tahan laga uniform de idu nala pani to flash greeting na uniform letra hui kina tuk pa labi ami anke tahan laga grievances kan share grisha aru ami itia uthikina reporting gradam dibi nala la idu pani laga gunde man pure smell grace to bhabi sabi yati osori taka tokon malikan hobi na always students kan hobi aha cha kram de kiman bia gun ba tan idu smell luikina par grace aru idu TMC sanitation office bi man dur dibi noy just nearby ase to tahan brabi idu tan initiative law noy bi korbi noy tahan brabi aigina sapak grite holibi aru tahan idu nala holibi panai dile phalo kina amni anke public khan laga phal nimite idu nala holibi banai dile aru idu pani sapak grite phalo kina dibi janai de ase aru itu kala noi kina public khan gi request kore ase amni khan laga chapra to ina kan nala osore nipikale bishi balo kile kuli do Nagaland TV kan hota amni anke koi deki idu nala block hui ja pani power flow nukra do saikina chashikuli do amian public khan lai galdi deki bishi bak ina nala te chapra khan bika bai pani do flow hui no hui kina chai kina nala la pani do rasta de olai kina ola laga opor de news coverage kan bi ti deki aru amni anke warn bi gri deki idu karni ajibi Nagaland TV kan public khan ge request kore ase idu nala la osor de ina chapra khan do nipe kai de bishi phalo aru concerned authority ge bi idu pani ina ka jama hua do public khan nimide phang Ito hopo muilong pom laga ground report. Itia mon khata break loigna joldi wapas ai jabo. Welcome back viewers of Nikan Sagase Nagamese Prime Time. SMDCs or SMCs nimide ekta one day block level community mobilization program ke Department of School Education Samagra Shiksha aro Lighthouse Nectar pra organize kushe. Resource persons kan thagishe Vizole Chucha Joint Director DOS Rukuzo Hoshi State Coordinator Samagra Shiksha aro Nukni P3 District Associate Nectar Mon. Resource persons can bra child friendly environment laga importance aro differently disabled students ke teaching aro learning process laga sob aspects te recognize kuribole laga uporde photo patishe. Projector ke dikhai kina teachers aro SMDCs nohile SMCs members laga role uporde jankari dishe. School day child enrollment banai rakhibole uporde kishim steps kan chanaishe. Teachers SMDCs aro SMCs ke ground level pra students aro environment bujigena rakhibole bi samjaishe. Idu pichede tobu block bitor aha kunoba existing schools laga grievances highlight korishe. Aro tai class 5 hobi 6 hobi pass hobi tala certificate tu yete jai jabo inega la ja ase to itula problem du ki ase amakan Nagaland de khali ekta district noy sob district te ase itu laga khatom hogina thakibo laga itedi beshi komti manu porigina ase do aji tok tu alok uthigina thakibo bole bi 16 March tok tu 100 majude 27 hi hogina ase to alag states kan itu all over India se alag states kan tu 97% punji jaise 100 majude 97 tu khatam hoise tinta hi bajigina thaka laga se amagan Nagaland do khali 27 hi hogina ase itu bishi slow ho jaise dosra problem thakili pare holibi ekta problem do amakan
itu alok amakan nagamanokan itu daw pora laga enega bi hoigina thakala bi huni pa ase amakan first adar ahadam de enrollment hodam de ai itu tu ঠিক না হবো কোনে বেশি মানুষ রেজিস্টার করে নাই তো তো itu নিশনা itu bi itu হিসাবতে হবো না কি নিগা ভাবনা থাকি আছে কইনা হনি পা আছে তো itu laga করে দেন দে সিন্স বাচ্চা খান তো ছোট ছোট আছে মাইনর আছে itu কারণে প্যারেন্টস খান লাগা পারমিশন কনসেন্ট itu লাগে তো itu কনসেন্ট লাগা দো লাগিয়ে দো প্যারেন্টস খান না আধার নাম্বার বি লাগে এনেগা হবরা itu tu কি আছে হো কইনা প্যারেন্টস খান বি বেশি ডাউট হইনা আছে কইছে অলরেডি itu tu এনেগা লাগা না হই দে itu tu আমাকান রেকর্ডস খান পুরা যেতে যাব তো কি সাল হলে বি না হারা হইছে তো এনেগা হইনা ক্লাস 12 পাস হবো কলেজ তে বি জাদাম তে বি itu চলাই যাব হইছে তো কিলা মানে সব রেকর্ডস তে যাইছে তো एग्जांपल আজিকালি মেট্রিক एग्जाम দিন আছে তো তো দিয়ে আগে দে আপনার নিউজপেপার দে সাই থাকিছে বলে লস নোটিস বি এসে দেখিব দে কিলা লস নোটিস এডমিট কার্ড হারাইছে কোনে তো তাই কান কি কারণে হারাইছে কোনে নিউজপেপার দে দিয়া আছে এটো আরো জায়গিনা নতুন এপ্লাই করবনে কারণে আছে এটো হারাইছে কইছে বলে পুলিশ স্টেশন জায়গিনা এফআইআর এটো হারাইছে কোনে রিপোর্ট এটো বানাবো লাগে তো এটো আছে তো এটো নেইবার্স খান হলে বস্তিতে কোনবা দাও থাকিছে বলে এটো বালবার কইনা জলদি করে দিব লাগে একটা পয়েন্ট আছে ইন্ডিয়া states aro union territories kan sob thaga do Nagaland laga do sob se niche phale ho jise ekta problem do amakan school te bacha class 2 tok do puribo kiba hobo lagna government laga policy ekbar change kori kina itula implement kore ase puribole na pare aro inkobi 2 plus 2 2 into 2 iniga basic kan bi na pare holaga amakan students iniga choto class kan ina hoje hole bi class 2 tok itu kan choto pare lage aro ekta to puribole pare itu ekta kotha ase puriele bi ki puri ase na bujie itu bi alag kotha ase itu karone learning with understanding learning what he is reading ine hobole taki puri ase bujine puri ase khali puri bole para la na hoy inega hobola laga program ase dei itu laga to itu kori ase class 1 to 3 laga saise bole jete sabo mon laga do 15.45 itu sabse niche wala bin hoy bole bi itu komti hoye jise alag districts ka proper kori bole lagan puri bole digdar paina thikam pare নহলে ইনকো গান কৰিবলৈ দিগদাৰ পাই লাগা থাকিবিল পাৰে ক্লাস 1 to 3 হিসাবে এটু কাৰণে ইটু কাম প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেন্ট কৰি আছে নীতি আয়োগ pra Nagaland sarkar logode miligena public health and wash for north eastern states koigna ekta regional workshop March 26 day town hall zone niato by the park chumukidi made loise regional workshop tay public health challenges kuntu pani sanitation hygiene aro waste management oporde address koise public health engineering department and cooperation minister Jacob Jimomi kun special guest thakise taibra janaise ki 3,63,829 rural households bitorde 3,37,498 households nohile 92.76% ke functional household tap connection dishe Bajikena taka 26,331 households ke March 2025 takte tap connection dibo koina chanaise 1,033 har ghar jhal villages bitor 643 bosti khando har ghar jhal certified huise Rural Development and SIRD Minister Mutsubu Chamirpra infrastructural facilities nathaka resources based phal nathaka aro technical gyan nathaka pra Northeast region ke handicap kuri dishe kushe
জমিৰ পৰা পভাৰ্টি হাতাবলৈ কাৰণে নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰামছটো লোকেল আৰু ৰিজনেল লগতে জুৰিব লাগে কৈছে Nagaland government Swasti state dissemination pra 26th March Kohimade social protection and mobile medical unit interventions opode meeting to Nagaland Health Protection Society Conference Hall Directorate of Health and Family Welfare Kohimade loise Principal Director Health and Family Welfare Dr. E Motsutong Paton pra program te mobile medical unit opode address kushe Taipra MMU lagi thaka manukhan karne Asha aro VHSNC khanke community mobilization laga function lobole urge kushe Taipra akhar rakishe ki MMU launch kura pra health challenges address kurule modot dibo aro program te Nagaland opor MMU laga highlight kurikina Dr. E Motsutong Paton pra ki friend nimite MMU launch kurishe Nagaland MMU Gypsy manpower doctors pra provide kurikina itia 11 functional MMU ase aro panchta MOs Kohima Mukokchong Dimapur Woka aro Zinapodote ase kushe We are a part of the Tata Group. The Tata Group was founded about 157 years ago, and Sri Jamsetji Niswani Tata is the founder of the Tata Group. And his quotes, I quote him, he said that in a free enterprise, the community is not just any other stakeholder in business, but is in fact the very purpose of its existence. And this philosophy continues to guide all Tata companies in their business as well as CSR endeavors. As per the Companies Act, corporates are required to draft their own CSR policies and to put it in the public domain. So for Tata AG, it's a two-pronged approach, caring for people and caring for the planet. Under caring for people, we have education, healthcare, rural development, disaster response. And under caring for planet is environmental sustainability. So our initiative is under the healthcare CSR theme. And the geographies are, apart from being proximate to business operations, reach out to underserved areas, states where Tata is lead insurer, as Dr. Nika mentioned, across rural urban areas. And we have identified certain key communities, including the scheduled castes and the scheduled tribes under the Tata Affirmative Action Program. So this is just a visual representation of the 5 themes that we just spoke about. As I was mentioning, under the Tata Affirmative Action Program, those who have been historically disadvantaged, so those key communities, including the SC, STs, persons with disabilities and women from marginalized communities, there is a special focus to serve them under the pillars of education, employment, employability, entrepreneurship, and essential enablers. I'll walk you through some of the key initiatives which has relevance to this region. Scholarships under the education for such girls, 2/3 of them, 66% are from the Northeast. And on the graph, you can see the maximum being from Assam, Arunachal, Manipur. We also have 5 students from Nagaland being supported. They are studying in different states of the country, in different colleges. Again, a large part of it are tribals. About 58% are studying medicine. The balance is engineering, and the breakup. So 11 of them are in AIMS, 36 in IITs, 85 in NITs, 179 in government medical colleges. And we also have the senior leadership of the company volunteering their time to select these students. So we have an NGO partner with shortlist, and then right from the chief investment officer, the chief operations officer, the CHRO, the head of legal secretary, all of them volunteer their time to select these students. Again, in the Northeast, we have a competitive exams coaching for NEET and JEE. This is being done in the PM Shri Jawaharlal Navoday Vidyalaya School, in the central government school. It's happening in Kokrajhar in Assam. So there are 40 students per year in 11th and 12th, and these are the results. They have appeared for the JEE mains. So out of the 17 students, 3 of the students have scored above 90%. And we are hopeful that they will get admissions in very good colleges. Similarly, in Kohima, this year we began in the PM Shri JMV Kohima School. Okay, similar coaching project. They are still in standard level. And the last time when we had visited here, as a part of the inauguration of MLB, we had a CFO and we had handed over the digital computing devices to the students that will be used batch of them. Similar coaching centers existing in Bihar. The students from 3 Pradesh
in partnership with WaterAid. Similarly, we have a telemedicine unit in UP with a hub and spoke model with a hub in Varanasi and then 2-3 districts where the spokes are there. And through telemedicine, we are able to have free consultation, free generic medicines. About 40,000 patients annually are getting better. Similarly, for the police who keep our cities safe, for the women staff, the constables and officers, the wash facilities for them. So we are doing it in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi, NCR in this region. This is our project. We are really happy to be a part of this initiative, and I don't know all are aware, but I think one of the first beneficiaries was a baby girl once it was inaugurated. EBRC Changtongya B Bitorde SMC aro SMDC Khan Korne Ekdin Laga Block Level Community Mobilization Training Tuesday din Changtongya Town Hall de loishe. Directorate of School Education Assistant Director Imti Sanglapra DOS Samagra Shiksha aro Nectar pra projects aro activities kan loi thaka khan Agnato under 4-day inter-school sports competition 26th March Agnato ground de shuru hoise. Agnato ADC D Robin Pra special guest kurikina opening ceremony grace kurise. Competition to bridging schools building schools laga theme bidor de loi ase. Sop milai kina 8 schools pra competition de hesa loi ase aro bishi pra bhi 1000 students opor event e participate kuri ase. ADC D Robin Pra students khan ke resilience aro teamwork laga spirit rakhi kena perseverance aro sportsmanship competition de dikhawale encourage kurise. Tai pra Agnato sub division bitorde sub head of officers aro well wishers khan ke event de support dia nimite khushi janaise. Competition to Agnato Town Students Union Pra Head of Officers, Agnato Subdivision logode collaborate kurikina, aro Nagaland Super League Pra support kurikina organize kurise. Nitsato K Yaptomi, President ATSU Pra, welcome address deliver kurise, aro Awoka Awomi, Sports Secretary ATSU Pra, oath taking administer kurise. Delhi High Court pra Wednesday din notice issue kurise up leader aro former Chief Minister Atishi kun pra corrupt practices pra election judice koina ilzam lagai kena ase. Justice Jyoti Singh pra Election Commission of India, Delhi Police aro Kalkaji Assembly constituency laga returning officer ke notice to phataise. Court pra respondents ke petition te tai laga jawab file kuribole chanaise. Aro mamla ke July 30 te hunibo koise. Itu petition to advocate T Singh Dev file pra file kurigina Atishi laga election ke null and void janai dibole mangise. Atishi to Kalkaji seat pra tai laga rival BJP Ramesh Biduri ke 3521 votes pra haraikna election jitise. Reserve Bank Governor Sanjay Malhotra pra Wednesday din financial day regulation banawale nalage kushe. Malhotra pra kushe ki 94% adults kan nijor laga bank account ase.
তাই আরো খুশে কাস্টমার্স লাগা রাইটস আর কনভিনিয়েন্স ধ্যান দে রাখি কিনা কাম করি কিনা যাব লাগে Let me outline some of my thoughts for the forum in these areas. First, while we continue to make our financial systems safe and secure against money laundering and terrorist financing, we as policymakers need to be mindful that our measures are not overzealous and do not stifle legitimate activities and investments. We need to have laws and regulations which, with surgical precision, target only the illegitimate and the illicit, rather than use very broad and blunt tools which unintentionally hurt even the honest. Similarly, while making the policy, it's important to have very precise and balanced regulations. It's equally important that while we are implementing them, we keep the impact that they are going to have on the persons and the businesses in mind. Risk-based approach is recommended in this regard. We all, try to follow risk-based approach to be able to balance this. But let's keep in mind that this is only one step forward in this direction of reducing compliance burden while being able to pinpoint the suspicious and the dishonest. Coming to financial inclusion, I think India has made substantial and remarkable progress. As per our information, about 94%, more than 94% of the adult population today has a bank account. Many of them have more than one, but there is still need to continue to widen and deepen it. Together need to put our heads together as to how we can make the system more robust, more effective and efficient, so that all regulated entities, all regulated entities can coordinate and make it easier for everyone to do this KYC process, so that there is no repetition of unnecessary KYC multiple times by different regulated entities for the same person. While technology has enabled and eased doing of business, at the same time it has also facilitated and fostered new and very sophisticated means of money laundering and illicit financing. So we need to be very cautious and alert all the time, especially the private sector people who are involved over here. And so we need to continue to closely cooperate amongst ourselves, the government agencies and the financial entities, civil society and others. And we are determined to further strengthen our financial system to deter and combat illicit financial activities, taking into consideration the recommendations made during the evaluation. Another important area which needs discussion is the travel rule. In today's world, fast payment systems are revolutionizing financial access and deepening financial inclusion. Developing countries like India have made huge progress in making digital payments accessible, affordable, and convenient. While card networks have helped the developing economies in improving fast payment systems, fast payment systems like the UPI that we have in India have assisted emerging market and developing economies leapfrog in this area. We have also enabled cross-border payments using these fast payment systems with a few countries. We will continue to work towards fulfilling our commitment to the effective implementation of the next phase of the G20 roadmap towards inclusive cross-border payments by 2027. You are all aware that a lot of work needs to be done over there, and it's only a matter of time, I think, that cross-border payments will also become much more easier and cost-effective. And so in this context, the ongoing discussion in the FATF recommendation 16 regarding the travel rule assume a lot of importance. To meet the G20 objective
of making cross-border payments faster, cheaper, convenient, transparent, while at the same time maintaining their safety and Kamalpur Sub-Division Administrative Office Quarters Osor Dalai District Tripura de Surjit Dutta goikna ekta manu laga ghor de jui ulaise Wednesday puchor. Jui ula homoy gor malik to thaka nai aro jui ke puila bosti manu khan pra dikise. Bosti manu khan pra fire department personnel ke khobor digina bishi deri mehnat kora piside control de anibo parise. खबर हिसाब दुता लगा आंटी मालबिका देव दुता दो घोर लगा दूसरा रूम एकता दे बुही थाकिसे खबर हुना साथ साथ दुता कुन अगरतला दे काम करे ताई फात बस्ती पहुंचिसे ताई कोशे के जुईते ₹12 लाख जुली जाइसे जुई किनागा शुरू हुइसे जानिबले नापारिगिना आसे Nota Naxalites juntute choita shamil thaka khan maki ase taikan pra Chhattisgarh laga Sukma district te surrender kura pra inam ₹26 lakh taikan ke dishe taikan khushi ki Maoist ideology aro Communist Party of India Maoist te bitor chamala ulai thaka pra alchi lagi kina charise Security forces laga pressure aro Chhattisgarh sarkar laga niyat nelanar development scheme bitorde surrender huise surrender hua bitorde banduk matkam kun People's Liberation Guerrilla Army laga member ase taige inam ₹8 lakh dishe kile mane taido 2020 minpa ambush aro dusra attacks te bi hat thakise Surrender kura manu khanto ₹25,000 paise aro sarkari policies bitorde rehabilitate kuribo 2024 te hi 792 Naxalites pra Bastar de surrender kurise शासन की जो नियत निलंबन योजना है पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान जिला सुकमा में जो चलाए जा रहे हैं लगातार जो कैंप खोले गए हैं और ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं उससे प्रभावित होकर आज 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है इस 9 नक्सलियों में से जो नक्सली शामिल है बटालियन नंबर 1 उसके अलावा जगरगुंडा एरिया कमेटी किस्टाराम एरिया कमेटी में जो शामिल नक्सली थे इनमें 26 लाख का इनाम जाहिर किया गया है जैसे बंडू उर्फ बंडी मरकाम ये बटालियन का सदस्य था पदाम सम्मी कड़ते विचे मुचाकी मासे और अन्य जो नक्सली है उन लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है काफ़ी बड़ी बड़ी घटना में ये नक्सली शामिल रहे हैं जैसे मिनपा जगरगुंडा में जो एम्बुश की घटना हुई थी कैंप अटैक करना उसके अलावा जो शासन की जो विकास काम है उसको अवरोध करना ये सब काम में सम्मिलित थे लेकिन नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उससे भ्रमित होकर आज नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है Jafar Ghulam Hussein Irani kun ekta chain chokra gang member thakise taige Wednesday din ekta encounter de Chennai police pra murai dishe Tuesday pujor choibaji de choita chain huise kushe chor huise kushe saida pete police pra CCTV footage sob check kurina 2 June ke airport de durise aro dusra ek June ke Ongole railway station Andhra Pradesh de durise Tinda chorto Irani gang pra ase aro ekjon pra police ke guli marise aro police pra retaliate kura de ekjon burise Hussein aro dusra duita members to crime kurigina Chennai de pulabole koshish kurise aro police pra rukhabole kurise Police Commissioner Arun pra koshe ki sob chor hua jewelry do wapas paise Police aro koshe ki Mumbai aspas te chor kuri thakise hudibi crime to desh gona kona de chuli thakise Odisha Assembly de chamela ulaigina Wednesday din Speaker Suramma Padipra Assembly ke 4 bar suspend kurise aro duita Congress MLAs ke indiscipline dikhabra suspend kuri dishe House te 10:30 AM te question hour nimite assembly hua do idu sat sat opposition BJD MLAs pra ST SC aro OBCs pra education aro job te reservation laga chamela opore sawal utise aro house bahare ulai jaise duita Congress members pra digdari dia opor sarkar laga chief whip Saroj Kumar Pradhan pra ekta motion move kurise taikhan laga suspension mangikina Idu piche house pra voice vote pra adopt kurise सरकार बीजेपी सरकार डरता है
हमारा डिस्कशन को डरता है, इसीलिए हमको हमारा पार्टी को सस्पेंड करता है। हमारा जो मांग है जो महिला को सुरक्षा देने के लिए, हमारा मांग है बच्ची को सुरक्षा देने के लिए हाउस कमेटी बनाना चाहिए। हाउस कमेटी बनाने से वो लोग पानी खीर हो जाएगा। वो लोग चलाना चाहते हैं जो कल 12 विधायक को सस्पेंड किए थे, मारपीट किए थे, आज 2 विधायक को सस्पेंड किए। अरे क्यों कर रहे मतलब अपना जो स्टेट का जो इश्यू है, स्टेट का जो मतलब जो नारी लोग का, माँ बहन का जो इज्जत लूट रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग हाउस में सरकार को जवाब मांगते हैं, वो देते। South Korea laga South East region de at least 24 June wildfire de morise. Victims kan bishibak 60s aro 70s laga es pas de ase aro authorities pra kushiki 26 June nishna jokom hoise 12 June critical condition de ase. Wildfires pra 23,000 manuge force kurikina taikan laga ghor pra ulabole dishe. Itiabi situation do critical ase aro acting president Han Duk-soo pra kushe ki idu wildfires to history de sobse biya wildfire ase kushe. Jui pra 1300 saal purana Gosa temple juntu Useong city de ase idu bi julai dishe. Cultural relics khan ke hatai digina safe jaga de loi jaishe kushe. Jui to Sancheong sheher de Friday afternoon te ulaishe. Aro Useong te spread hui jaise. Strong aro dry hawa pra neighboring jaga khan Andong, Cheosong, Yongyang aro Yongdyok de bhari ase. Tuesday din National Fire Agency pra kushiki itu do bishi dangor hatsa ase. Wildfires to South Korea de bhi uncommon ase kushe. Itu joi pra 18 June manu laga jivan jaise. Jungle laga 17,000 hectares to biya hui jaise. Kuntu South Korea laga history de third largest ase koigina janaise. Prince Harry to Sentibel Charity pra resign kuri loise. Juntu tai pra 2006 te co-found kurise. Sentibel Charity laga main maksad to Southern Africa de HIV aro AIDS bimar thaka manukan ke modad dibole karne thakise. Tai pra tai laga co-founder Prince Sisio of Lesotho aro trustees board ikilogode step down kurise. Chairwoman Dr. Sophie Chanduaka logode rishta biya hoja nimde. Dr. Chanduaka ke resign kuribole kushe. Kintu tai pra trustees laga khilaf UK Charity Commission ke report kuri dishe. Power laga abuse aro harassment accuse kurikina. Charity Commission to itia governance issues laga investigation kuri ase. Duke aro Prince Sesopra resignation to monduk pra dishe. Aro kushe ki situation to undeniable huigina chai ase. Former trustees be resign kurishe. Dr. Chanduaka laga actions legal aro financial burden karne. Odisha bitor both day Tuesday din district de Manmuda police station bitor de pra 3 June IRB Indian Reserve Battalion Jawans khan cannabis durigena thaka homoy de giriftar kurise. Both police khan pra sources logote pra khobor pai kena bisarise. Juntu 15 kg cannabis khan seize kuri loise. Police pra kushe ki idu hatsa opore further investigation chai ase. Idu bi janibole parise ki information dia hisab bahut aro Khandamal areas te cannabis cultivation to idu laga moina te shuru kurise. Aurangabad district te panchta Naxals kun khan Jharkhand Jan Mukti Parishad JJMP laga bent outfit pra ase. Tai khan ke Bihar police pra Tuesday din giriftar kurise koina officials pra janaise. Arms, ammunition kote 3ta 315 bore rifles, ekta country made rifle, 13 cartridges, ekta walkie-talkie set, 7ta camouflage uniforms aro kishim saman khan tai khan logote pra paise.
बिहार पुलिस लगा स्टेटमेंट हिसाब गिरफ्तार हुई जा खान लगा नाम तो बालीराम कृष्णा पाल मितलेश यादव नरेश राम और चौहतु सिंह आसे कुशे 4 जन तो औरंगाबाद ते थका खान आसे 5 जन के भी माली और नबीनागार पुलिस स्टेशन लगा जगह दे रेड कुरा समय गिरफ्तार कुशे गिरफ्तार हुई जा खान मार्च 8 ते नबीनागार पुलिस स्टेशन दे केस दर्ज हुआ दे लिंक आसे कुना छनाइछे इदु दिन 10 to 12 नक्सल ऑपरेटिव्स खान निजर के डिस्गाइज करिना एक्सटॉर्ट करबले कोशिश करिसे कुशे दुरी लोआ खान प्रा कृष्णा पाल और नरेश राम दो क्रिमिनल हिस्ट्री भी आसे कुना छनाइछे जैसा कि आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा कि औरंगाबाद पुलिस के द्वारा STF और SSB के संयुक्त छापेमारी के दौरान हम लोगों ने कुल 8 नक्सलियों को और 5 हथियार को भारी मात्रा में हथियार और गोली को बरामद किया है। कुल 8 नक्सलियों की पहचान हुई। शुरुआत में 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई। उस समय हमारे पास सिर्फ कुछ सामान ही बरामद हो पाए थे, हथियारों की बरामदगी नहीं हो पाई थी। जो सामान बरामद हुए थे उसमें नक्सलियों से संबंधित लिटरेचर था, भाकपा माओवादी का लेटर हेड मिला था, लेवी जो पूर्व में मांगा गया था उससे संबंधित हिसाब का बही खाता मिला था। ऐसी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई थी, लेकिन किसी तरीके का हथियार प्राप्त नहीं हो पाया था। तो उन लोगों को परसों गिरफ्तार किया गया था और कल जेल भेज दिया गया था। इसी क्रम में कल हम लोगों ने कुल मिलाकर 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और उनके बाद जब रात में उनके निशानदेही पर छापेमारी की गई है तो हमारे पास कुल 4 बड़े हथियार जो लंबी रेंज के देख रहे हैं बड़ा हथियार है ये बरामद हुआ है। एक 3 नेट बरामद हुआ है, 12 गोलियां बरामद हुई हैं और एक 7.6 mm का अलग से गोली बरामद हुआ है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस से चोरी किया गया या फिर लूटा गया एक मैन पैक बरामद हुआ है। कुल 7 चितकबरा जो कपड़ा है ऊपर नीचे का पहनने का ये भी बरामद किया गया है। इनके पास से TSPC का और झारखंड जन मुक्ति मोर्चा परिषद इसका भी लेटर हेड बरामद हुआ है। आपका माओवादी का लेटर तो बरामद हुआ ही है। कई लोगों से जो पूर्व में इनके द्वारा लेवी मांगी गई है उसका बही खाता मिला है जिसमें लेवी का अमाउंट लिखा हुआ है जिससे उत्तर प्रदेश के तीसरे दिन पुलिस प्रा BJP लीडर गुलफाम सिंह यादव के मर्डर क्रा निमित्ते 6 जन के गिरफ्तार करिसे। अच्छा दो पॉलिटिक्स मामला ओपरते जकरा उलाते हुइसे। एक्यूज खान प्रा BJP लीडर यादव के पॉइजन इंजेक्ट करिकिना मुराइसे। मार्च को दोपहर 1 बजे एक व्यक्ति गुलफाम सिंह यादव जो पहले यहाँ पे गुन्नौर सेक्टर के रहने वाले हैं, दफ्तरा गांव में उनको इंजेक्शन मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। इस सूचना पे पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची थी। उसके बाद में इनको अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में पुलिस द्वारा वहाँ कैमरे चेक किए गए, विभिन्न एविडेंस कलेक्ट किए गए और आज कुल 15 दिन बाद में पुलिस के द्वारा उस सनसनीखेज इस हत्याकांड का खुलासा जनवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। महेश प्रधान और उनके बेटे जो ब्लॉक प्रमुख है रवि, इनका मोटिव जो हत्या करवाने का ये था कि पहले एक बीच में MLC के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में कहासुनी हुई थी गुलफाम के और जो मेडोली प्रधान महेश है इनके बीच में, और अभी जो ब्लॉक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे, इन 2 कारणों की वजह से इन जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है उसको देखते हुए इन्होंने गुलफाम सिंह की हत्या करने का निर्णय लिया। और उसके बाद में इस हत्या को सफाई से करने के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा जानकारी भी ना मिले, इसलिए इन्होंने इस तरीके की एक मैकेनिज्म निकाला कि 5 मिनट के अंदर किसी व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मतलब डेथ हो जाए और इसको इस तरीके से हो कि ये लगे भी ना कि ये पॉइजनिंग भी ना लगे। इसके लिए उन्होंने इस तरीके के केमिकल का उन्होंने पता लगाया। पुलिस के द्वारा जब इस व्यक्ति मुकेश को गिरफ्तार किया गया तब पता चला कि इन पूरी जो घटना है इसके बारे में, और बाद में जब महेश से पूछताछ बिहार आर रेलवे स्टेशन दे मंडे दिन 3 जन मानु गुलीप्रा मारिकिना मुराई दिशे। विक्टिम्स कांदो 16 to 17 साल माकी एकजन और ताई लगा बाबा आसे। बाबा दो जवान एकजन प्रा मारि दिया पिछते जवान तो ताई निजर मारिशे कोइना पुलिस प्रा जनाई दिशे। पुलिस खान खबर पाइकना सीन दे जल्दी पहुंची जाइसे। बुलिबी की कारणे मुराई दिशे इदु लगा एक्जेक्ट मोटिव तो इदिया भी ना जाने। बुलिबी लाभ एंगल कारणे हबो पारे कोइना पुलिस खान सस्पेक्ट करि आसे।
Ido hatsa opor local authorities khan pra chanbin shuru kurishe. Parliament pra Disaster Management Act 2024 logode amendment pass kurishe ki accountability aro disaster response improve kuribole. Home Minister Amit Shah pra assure kurishe ki eco centralization power nathakibole. Idu changes pra institutions empower states aro address climate change kan related disasters kan ke strengthen kuribole ase. Shah pra national disaster plan increase disaster funds aro key initiatives can be highlight kurishe. Idui nohoy taipra Congress kan ke bhi criticize kurishe. Juntu tai kan relief funds mismanagement wala thakishe. मान्यवर आपदा प्रबंधन का जो विषय है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के तीसरे भाग में कंकरन लिस्ट की एंट्री नंबर 23 में समाहित है। एक प्रकार से आपदा प्रबंधन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का विषय है। इसलिए कई सारे सदस्यों ने चिंता करी कि इसमें सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को हानि होगी। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को, सभी राज्य सरकारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें न केवल केंद्र सरकार, न केवल राज्य सरकार, पंचायत और हर एक नागरिक को जोड़ने की हमारी मंशा है। इसमें सत्ता के केंद्रीकरण का कोई विषय ही उपस्थित नहीं होता है। ये पूरा विधेयक अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो हमारी आपदा प्रबंधन के लिए जो लड़ाई है, आपदा के खिलाफ लड़ाई है, वो लड़ाई को एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच से आगे बढ़ाकर न केवल प्रोएक्टिव अप्रोच, इनोवेटिव अप्रोच और पार्टिसिपेशन करने वाले अप्रोच तक पहुंचाने का ये बिल में प्रयास है। I shall now put the clause 1 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause 1 as amended is adopted. The enacting formula stands part of the bill. There is one amendment, number 11 by Sri Amit Shah ji. Are you moving the amendment? मैं प्रस्तुत करता हूं। Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the enacting formula as amended to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The enacting formula as amended is adopted. The title stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The title is adopted. Sri Amit Shah ji to move that the bill as amended be passed. मान्यवर जी, मान्यवर मैं संशोधित विधेयक प्रस्तुत करता हूं। Motion moved that the bill as amended be passed. The question is that the bill as amended be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill as amended is passed. Punjab Finance Minister Harpal Singh Chimapra Wednesday din financial year 2026 nimite rupees 2.36 crore elan kurise. Chimapra budget speech dia homoy Punjab Sarkar pra drugs rukhawalai anti drug campaign kurikina ahi ase kurise. Taibra janaise ki Chief Minister Bhagwant Man laga visionary leadership pra Punjab te batlava bishi anishe. आज मानयोग वित्त मंत्री साहब वालों आप सब दे लई लंच का प्रबंध भी किया गया है।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚ 2,36,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਰਮਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰ 2.51 ਅਤੇ ਸਰ 3.84 ਜਿਹੜਾ 3.84 ਹੋਣ ਦੀ ਸਰ ਉਮੀਦ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਫਿਸਕਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਫਿਸਕਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੋਮਗਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਝ ਅੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਰ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੈਂਸਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 2 ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰ ਹੁਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਸਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਫਸਟ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ দুইটা ফ্ৰেঞ্চ জেটস যোনটো এৰোবেটিক্স টিম পৰা আছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰান্সে একটা এয়াৰবেছ লগা ওচৰতে টিউজডে দিন মিড এয়াৰ কোলাইড হৈছে। এইটো হাদসাতে 3টা মানুহ ইজেক্ট হ'বলৈ পাৰিছে। 2টা পাইলটছ আৰু একটা পেছেঞ্জাৰকে মিলাই কিনা তাইখানকে জিন্দা পাইছে, কিন্তু একজন মানুহতো জখম হৈ কিনা থাকিছে। একটা প্লেনটো চিলতে ক্ৰেছ হৈছে, তাতে পৰা জুই ওলাইছে। এইটো হাদসাতে চিভিলিয়ান কোনবি জখম পোৱা নাই আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি সাৰ্ভিসেছকে ডিপ্লয় কৰিছে। ফ্ৰান্স তো পইলাৰ পৰা আলফা জেটছ লগা ইস্তেমাল কৰি কিনা ইউক্ৰেইনিয়ান পাইলটছে ট্ৰেইন দি আছে। তো ভিউৱাৰ্ছ, নাগামিজ প্ৰাইম টাইমতে আজি নিমিতে ইটোই থাকিব।